Namaste, you're on The Nation at 5. I'm Anand Narsimhan coming to you live from a buzzing CNN News 18 newsroom this Friday evening, ladies and gentlemen. And we start with a CNN News 18 exclusive. An exclusive which has many layers and many contexts to understand. It is about the killing of Ripudaman Malik in Canada, a Khalistani, someone who is an accused and then was acquitted by the courts in the Kanishk bombing and hijacking matter. But more importantly, somebody who seemed to have a change of heart in the way there was a certain amount of organization against India and this entire secessionist movement that is Khalistan. He is a Khalistani, but he believed and he had turned around, and it started from the 17th of January 2022 when he had written a letter to the Prime Minister in which he had extolled all the efforts to try and integrate and also reach out and help and work with the Sikh community, the steps that had been taken to honor the service of the Sikh community for Bharat. Now, these were the aspects, but this man was shot dead in Surrey in Canada's British Columbia on Thursday morning. Ripudaman Malik, like I said, was acquitted in the 1985 Air India bombing case, and now CNN News 18 has accessed an intelligence note on the grounds, the scenarios around Ripudaman Malik's murder, which indicates a plot to silence elements in the Khalistani ecosystem who are siding with India, who are turning around and moving away from the secessionist narrative. And more importantly, this man on the 20th of July was poised to make mega exposés on Khalistani operatives who are working at the indications or perhaps at the goading of foreign elements, enemy elements who want to bleed India with 1,000 cuts. Now, this is the information that we have as per from our top intel sources. This information has been accessed by our investigations editor Manoj Gupta. Now, here are the inputs. The plot to silence voices aligned with India is afoot. Ripudaman Malik founded the Khalsa Credit Union and Khalsa School in Canada. He was set to start a Khalsa college and he had invited the Akal Takht Jathedar. The Jathedar was set to visit Malik to lay the foundation for the Khalsa college. The Akal Takht Jathedar visit was cancelled after protests by those critical of Ripudaman Malik. Ripudaman Malik did not allow the college to be used for anti-India speeches, saying, I will not allow it to be a platform for anti-India speeches. He had spoken on a Canadian Punjabi channel Sanja TV, calling anti-India elements enemies of Sikhs. He has even named some of them. He named Moninder Boyle and Hardeep Nijjar. Ripudaman Malik decided to expose them in a series of interviews, and his first interview was scheduled on the same platform that is Sanja TV on the 20th of July. Ripudaman Malik praised Prime Minister Narendra Modi, for which he was called Qaum Ka Gaddar by none other than Hardeep Nijjar, who used the platform of a Sikh temple in Surrey in British Columbia, Canada, to do the same, where he spoke for more than an hour. And this happened on the 22nd of January 2021, just 4 or 5 days after Ripudaman Malik had sent off a letter to the Prime Minister or addressed to the Prime Minister, thanking him for the overtures and the work that's been done for the Sikh community in India under the Modi Sarkar. Now, I have Rajinder Kumarji, former Special Director, IB, with me. Rajinder Kumarji, there are many angles, aspects to this. There would be many people who would question the credibility of a Ripudaman Malik, who was himself accused, later acquitted in the Kanishk matter, 1985 bombing hijacking matter. But many are asking the seriousness or the level of control exercised by these Khalistani elements are operating on Canadian soil, their influence with India, and the levels to which they will go to. Because just the other day, their hand is suspected in the desecration of the Mahatma Gandhi statue in Vancouver also. See, Canada has always remained the hotbed of Khalistani extremists. They particularly, anybody from their rank speaking in favor of India is the traitor, and they punish it. And unfortunately in Canada, I'm sorry to say,
that in Canada nobody is punished for for killing people. Like Ujjwal Singh Dosanjh, he was killed. Where are the accused? Similarly, another journalist was killed because of pro-India writing. There is no punishment to anybody. So, and the Canadian government, the present political setup of Canada, it survives with the help of these Khalistani extremists. So that's how they are getting a free hand there. In fact, you know that some of the ministers in the present cabinet, Canadian cabinet, they are also having a pro-Khalistani view and have been strong supporters of the Khalistani. So in such circumstances, anybody who speaks for India, who has understood the reality of the Khalistani movement and who has come and seen India with his own eyes, he finds that the things are not what they were propagated in Canada by some of the people who have left India in late 50s and early 60s. The things are totally different. Indian Punjab is a very modern place with the Sikhs having all the facilities, with the Sikhs having all the freedoms which even I would say that even Canadian Sikhs may not have, but they have the facilities here in India. Here is the Sikhs enjoy total equality. They are respected people. Everybody who sees a Sikh normally has a respect for him because in India, Sikhs have been part of Indian army has a tradition of having large number of Sikhs. Most of this quite a large percentage of its leadership comes from Sikh soldiers of Punjab. So in Punjab, the Sikhs are respected people, and anybody who have 1 or 2 trips of India, suddenly he becomes pro-Indian. So that's what is not tolerated by these extremists whose total bread and butter lies on this so-called Khalistani movement. They collect money and they enjoy their life with this. And in Canada, you see, besides the Babbar Khalsa, to which Ripudaman Singh Malik also belonged earlier. Yes. There is a International Sikh Youth Federation in another pro-terrorist group. In fact, it is a terrorist group. You will be surprised that Bhindranwale's son is in Canada, and his brother, Bhindranwale's brother, is in Pakistan. Lakhbir Singh Dhillon. So and the Panjwar group also has a presence in Canada. Panjwar is again in Pakistan. Godawa Singh has a presence in Canada, and he has again in Pakistan. So these are some of the militant groups. Their workers are there in Canada, and somebody must have decided to punish it. Now, let me also say one thing. Some of these groups are so what I would say, okay, they have they have a great disliking for people who in any way support BJP or BJP leadership. You would see how earlier Rashtriya Sikh Panchayat leader was killed in Punjab. Similarly, here also in Hinderjit Singh Ray spoke about Mr. Modi, and I think that may be the tipping point for those fellows to kill him. Right. They have been, they just don't, because they know that the difference, if the Sikh difference between Sikh and Hindus in Punjab. Right. Sir, you named a few of these people. Now, please stay with me. We'll come back to this story in just a bit. We've just got a major development happening in the Bihar crackdown on a module which is working on activities which are against the interests of India. Now, in this Fulwari Sharif terror case, a person named Ilyas Tahir with an alias of Maghroob has been arrested from Fulwari Sharif on the charge of linking many people of Pakistan to the group by forming the Gazwa-e-Hind group. Now, this is the latest development that has come through. I'm going to request Rajinder Khanna ji to stay on with us and also speak to us on this development which has happened. But first, going across to Saurabh for more details. Saurabh, so this person has been arrested, and is he an Indian national, or is his nationality also dubious? No, Anand, he is a Fulwari Sharif resident, and he was a tutor
of Urdu and Arabi in Fulwari Sharif. He was arrested yesterday only after Jalaluddin and Athar Parvez's arrest. His arrest was made yesterday, but the ATS took over the charge from the Patna police, and then after investigation, Right. it was revealed that a Gazwa-e-Hind WhatsApp group was formed by him, in which he used to contact... Saurabh, I'm going to connect with you again because the Patna police is doing a briefing. Let's go across to that. के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा था। इसकी गिरफ्तारी के बाद हम लोगों को और क्लूज मिली हैं और जो बाकी ग्रुप के सदस्य हैं, खास करके जो यहीं के रहने वाले हैं, उनका भी हम लोग ट्रेस करवा रहे हैं। इन लोगों के जो चैनल्स हैं, कहाँ से इनका फंडिंग आ रहा है, आय का स्रोत है, उसका सत्यापन करवाने के लिए एक विशेष टीम हम लोगों ने तैयार की है। ये ग्रुप 2023 में डायरेक्ट जिहाद नाम का एक स्लोगन दे के रखा हुआ था और इसके जो ग्रुप आइकॉन्स थे दोनों ग्रुप में, उसमें हिंदुस्तान का नक्शा था जिसके ऊपर पाकिस्तान के ये एक स्लीपर सेल माना जा रहा है और जो बाकी सदस्य हैं उनका सत्यापन करके उनकी भी गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। गज़वा-ए-हिंद के जो कमांडेंट है मूसा जो मारे गए थे, उनसे अभी वर्तमान में इब्राहिम है, उनसे भी कोई कनेक्शन इनकी जुड़ रही है? अभी हम लोगों के पास जो नंबर आए हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो लोग डायरेक्ट नंबर नहीं रखते हैं, ऐप्स के माध्यम से नंबर्स को क्रिएट करते हैं, तो अभी अनुसंधान प्रारंभ हुआ है इसमें टोटल 181 सदस्य जो हैं, एक एक नंबर का विश्लेषण किया जाएगा क्योंकि इसमें बहुत से नंबर ऐसे भी हैं जो दूसरे मुल्कों के नंबर हैं जिनका डिटेल्स हम लोग यहाँ से डायरेक्टली प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को अन्य जो सिस्टर एजेंसीज उनका सहयोग प्राप्त करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि उस तकनीकी विश्लेषण में कोई इस प्रकार के नंबर भी हम लोगों के प्रकाश में आए। सर 2023 को लेकर क्या मैसेजिंग थी और इसमें कितने एक्टर थे, किस तरीके के मोडस ऑपरेंडी के साथ ये जो मैसेजिंग है वो कर रहे थे? वीडियोस भी थे क्या अभी के सिनेरियो में, जैसे रिसेंट जो हैपनिंग हो रही है भारत में? अधिकांश जो वीडियोस थी वो कश्मीर के आतंकवाद के साथ संबंधित थी और इसके अलावा जो अन्य इस्लामिक मुल्कों में जहाँ जहाँ पर भी सिविल अनरेस्ट है, डिस्प्यूट है, ICS है, खुरासान, सीरिया की वीडियोज़ हैं, उन वीडियोज़ के माध्यम से ये अपने ग्रुप मेंबर्स को मोटिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों से जो दोस्त बता रहे हैं कि पाकिस्तान के काफ़ी नंबर हैं, उनसे जो चैट हो रहा है उनसे क्या बातें हो रही है पाकिस्तान के लोगों से? जैसे कि मैंने आपको बताया कि राष्ट्र विरोधी बातें हो रही थी, भारत को पुनः इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए और इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट कराने के लिए हिंदुस्तान के इस प्रकार की बातें थी, किस प्रकार से सोसाइटी में वायलेंस फैलाना है, इस प्रकार की बातें थी और जिहाद के लिए लोगों को कैसे प्रेरित करना है, उस संबंध में लाइक्स और वीडियोस और पोस्ट किए गए थे। अमरावती, उदयपुर या नुपुर शर्मा, इन सबको लेकर कोई कन्वर्सेशन था इसमें? नहीं, कोई डिस्कशन? इसको लेकर अभी तक कोई कन्वर्सेशन प्रकाश में नहीं हुआ। उनसे इनका क्या कनेक्शन है? उनके साथ भी इनका कनेक्शन जुड़ा? नहीं, अभी तक जो हम लोगों का कल का जो हुआ है उनके साथ ये एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। सर ये 2023 का क्या प्लान था इनका, क्या 2023 में जो इनकी पोस्ट वही चल रही थी कि हम लोग डायरेक्ट जिहाद में पार्टिसिपेट करेंगे। डायरेक्ट जिहाद आपके नक्शे की बात आपने बताई, तो नक्शे में किसी प्रकार की कोई टिक मार्क के लोगों के माध्यम से दिया गया है? नहीं, टिक मार्क नहीं दिया गया है, उसको एक अखंड भारत का जो पुराना नक्शा था उसी को ही पूरा अखंड भारत का करते हुए लेकिन उसमें पाकिस्तानी फ्लैग को प्रसारित किया गया। देखिए, अभी तक जो हम लोगों ने जो कल से हम लोगों ने गिरफ्तारियां शुरू की हैं, इसमें अधिकांश लोग तो फुलवारी के हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि फुलवारी सेफ जोन बन रहा है, लेकिन ऐसे जितने भी स्लीपर सेल्स हैं, क्योंकि इनके रीच बहुत जगह पे, जैसे कल वाले केस में भी आज मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, अन्य जगह पे जाके टीम्स रेड कर रही हैं, तो हम लोगों निरंतर सतर्क हैं और इस प्रकार के जितने भी सेल्स हैं या फिर इस प्रकार की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऊपर निरंतर हम लोगों की नज़र है ताकि कोई भी किसी प्रकार की एंटी नेशनल एक्टिविटी में कामयाब नहीं हो पाए। इस वाले मामले में 1 गिरफ्तारी हुई है और कल वाले मामले में 3 गिरफ्तारियां। ये माना जा सकता है कि जम्मू कश्मीर से अब फुलवारी की कनेक्शन जुड़ चुकी है? इसमें कुछ सदस्य जो हैं क्योंकि हिंदुस्तान के अलग अलग भागों से हैं और इसमें जो जम्मू कश्मीर के आतंकवाद को लेकर पोस्ट्स की गई हैं, फिलहाल तो यही इसमें एक कनेक्शन है। गज़वा-ए-हिंद जम्मू कश्मीर की सक्रिय संस्था है। हाँ, और उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश के तमाम लोग जुड़े हुए हैं, तो फुलवारी से भी ये कनेक्शन जुड़ रही है। पाकिस्तान का कनेक्शन हो सकता है? पाकिस्तान का कनेक्शन तो मैंने आपको बता ही दिया है। जो मूल रूप से व्हाट्सएप ग्रुप बना है गज़वा-ए-हिंद का, इसका जो मूल क्रिएटर है फैज़ान नाम का पाकिस्तानी हैंडलर है जो कि पाकिस्तानी नागरिक है।
जिसने ऐप के माध्यम से इस व्हाट्सएप ग्रुप को क्रिएट किया था और इसको एडमिन बनाया था। अभी क्योंकि बिल्कुल पूछताछ चल रही है फिलहाल, क्योंकि बाहर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 14 साल ये गल्फ में यूनाइटेड अरब अमीरात में रहा है, तो अभी तक तो हम लोग यही मान के चल रहे हैं कि वहाँ पे भी हो सकता है कि संपर्क में आया। जो एक्टिव कार्यकर्ता हुआ है 2020 से। पाकिस्तान के कोई बड़े कमांडर टेररिस्ट जो होते हैं वहाँ पे उनसे कोई संपर्क या उसके हम लोग अनुसंधान करेंगे, क्योंकि आप सभी वाकिफ़ हैं कि जो व्हाट्सएप ग्रुप के नाम होते हैं वो सीडोनिम्स होते हैं, और जब उन फ़ोन नंबर्स को डेवलप किया जाएगा तो हो सकता है कि इस प्रकार का जो बातें हैं प्रकाश में आएंगी। ग्रुप से जुड़ा था, ये कुछ जानकारी मिल पाई है क्या? ग्रुप कब जुड़ा और क्या कोई मनी ट्रेल भी इसमें हुआ है? ये 2016 में जुड़ा था, और जो मनी ट्रेल है हम इनके बैंक अकाउंट्स ले रहे हैं। बैंक अकाउंट, आधार कार्ड वो लेके फिर जो हमारा प्रवर्तन निर्देशालय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इसमें हो सकता है कि इंटरनेशनल लिंक्स भी हों और होंगे भी, क्योंकि इसमें जो ग्रुप के सदस्य हैं बांग्लादेश के भी हैं, यमन के भी हैं और अन्य देशों के भी हैं। तो इसलिए हम लोग जो मनी ट्रेल का और मनी लिंक्स का जो है उसके लिए हम लोग अलग से अनुसंधान करने के लिए प्रवर्तन निर्देशालय को अनुरोध करें। मास्टरमाइंड थे या कोई हालिया दिनों में कोई बड़ी साजिश, ऐसा कुछ आप लोगों को क्लू मिला हो, किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते थे? अभी तक तो जो अनुसंधान हुआ है उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ष 2023 में डायरेक्ट जिहाद नाम की पोस्ट को ये लोग काफ़ी कर रहे थे, तो उसमें क्या साजिश थी अभी इनका इंटेरोगेशन चल रहा है, तो हो सकता है कि कोई ना कोई इस प्रकार का कार्रवाई। 183 लोग हैं, उसमें बिहार के कितने लोग अभी पटना से शामिल हैं, कुछ पता चल पाई है? अधिकांश लोग जो हैं सीडोनिम से जुड़े हुए हैं। उन लोगों के जब कैफ आ जाएंगे और सब्सक्राइबर डिटेल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे तो उसके बाद क्लियर हो पाएगा कि उसमें कौन कौन से राज्य, कौन कौन से जिला और कौन कौन के देश। हाँ, पाकिस्तान के हाँ जी। कर क्या रहा था? रिक्रूट कर रहा था या फिर मतलब इनिशिएट कर रहा था, इंस्टिगेट कर रहा था, क्या कर रहा था? एक तो वही रेडिकलाइजेशन, और उसके बाद देश विरोधी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए वीडियो क्लिप्स को शेयर करना, और कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को यहाँ पे सप्रेस किया जा रहा है, तो इस प्रकार की पोस्ट्स और वीडियोस वहाँ पे थे। यानी जो 12 तारीख को गिरफ्तारी की गई थी वो अलग मामला था, ये अलग? हाँ, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग हैं जो फुलवाड़ी में रन कर रही है। हाँ, ये दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं। सवाल ये है कि आपका एक स्टेटमेंट कल काफी कंट्रोवर्सी जनरेट किया और बीजेपी के लीडर्स ने, तमाम बड़े लीडर्स, रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी और मेनी बिग लीडर, उन लोगों ने आपत्ति जताई कि आपने आरएसएस को कैसे PFI नहीं, देखिए बिल्कुल एक सिलेक्टिव मिस इंटरप्रिटेशन है, इसको मैं पहले भी क्लैरिफाई कर चुका हूँ। कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था आप लोग सभी उसमें अधिकांश लोग शामिल थे, तो एक आप ही के जो पत्रकार बंधुओं ने क्वेश्चन किया था कि इस ग्रुप की कार्यशैली क्या है, तो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स आए थे और जो इनकी इंटेरोगेशन रिपोर्ट जो कि राइटिंग में है, रिकॉर्डिंग में है और जो कि कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत भी की गई हैं, उसमें उन्होंने जिस कार्यशैली का जिक्र किया था एक संस्था का नाम लेते हुए, उसी कार्यशैली को सिर्फ बताया गया था कि ये कार्यशैली ये अपना रहे थे। इसमें किसी भी प्रकार के दो संगठनों की तुलना करना या फिर उनका आपस में कंपैरिजन करना, ये बिल्कुल कोई उद्देश्य नहीं था और ये बिल्कुल निरार्थक बात है। फुलवाड़ी शरीफ मामले में कुछ बताएंगे कि क्या नई जानकारी क्या है? किस वाले मामले में? PFI वाला जो जैसे कि आपको बताया कि टोटल 26 उसमें नामजद अभियुक्त हैं, और हम लोगों को और भी व्हाट्सएप ग्रुप्स मिले हैं। कुछ लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लेकर पूछताछ भी किया था, तो उसमें अधिकांश अभी जो हमारी टीम्स है, 2 टीम्स बनी हुई हैं, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी में जाके हम लोग छापामारी कर रहे हैं। ये मौलवी और फकनिया, ये 2016 में संभवतः पास ना PFI और SDP जो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस हैं वर्तमान में बिहार में प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कितने लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिनकी संलिप्तता आ रही है, बाई नेम FIR जिनके ऊपर हुई है? क्या किसी पूर्व में किसी बड़ी साजिश को इन्होंने अंजाम दिया है, किसी घटना में इनकी संलिप्तता रही है? जो कल वाली FIR हुई है उसमें आपको मैंने कल भी बताया था कि उसमें जो अथर परवेज़ पकड़े गए थे, उनके जो अपने भाई हैं मंजूर परवेज़, वो सिमी के एक्टिविस्ट कार्यकर्ता थे, और जब सिमी को बैन किया गया था वर्ष 2001 में, उसके बाद भी उस संस्था की, प्रतिबंधित संस्था की गतिविधियों को प्रचार प्रसार करने के आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया था। और उसके बाद जो गांधी मैदान ब्लास्ट हुआ था वर्ष 2013 में, जो ब्लास्ट केसेस हुए थे, उसमें जितने भी अभियुक्त थे उसमें जो अथर परवेज़ है वो उसमें बेलर का काम किया था।
फुलवारी मामले में टोटल कितने अरेस्ट हुए हैं अभी तक और कितनी डिटेंशन? 2 FIR हुई हैं। कल वाला जो PFI और STP वाला FIR उसमें टोटल 3 अरेस्ट हुए हैं। कुछ लोगों को डिटेन किया गया था, लेकिन उनसे पूछताछ करके उनको छोड़ा गया क्योंकि उनकी संलिप्तता प्रकाश में नहीं आई है। और आज के मामले में अभी एक ही गिरफ्तारी हुई है ताहिर की। टोटल 4 गिरफ्तारी हो गई। अरमान का क्या रोल था? अरमान का थोड़ा रोल बताएंगे। अरमान का रोल क्या था? अरमान मलिक का ये रोल था कि जैसे कल उसका बहुत विस्तृत पूछताछ किया गया। एक तो फाइनेंसिंग का काम करता था वो, और मीटिंग्स के संचालन करवाना, और उसने ग्रुप बना रखे थे, व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे जिसमें स्थानीय लोगों को, क्योंकि लैंड ब्रोकरी का भी काम करता है और इसका आपराधिक इतिहास भी रहा है। 3 बार ये जेल जा चुका है, मर्डर केस में बिहार शरीफ में जेल जा चुका है। तो इसके जेल के साथ भी कुछ क्रिमिनल्स के साथ लिंक हुआ करते थे जो भी वर्तमान में बेल पर हैं। तो उनके माध्यम से PFI के लिए ज़कात के रूप में फंड्स को इकट्ठा करना और उसको ट्रांसफ़र करना, मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करवाना, सदस्यता बढ़ाने के लिए, इस सब का प्रूफ उसके मोबाइल में भी मिला है और उसकी पूछताछ में भी उसने इस चीज़ की संपुष्टि की है। होटल में लोग ठहरे थे, कितने लोग आए थे और 6 से 12 तक क्या क्या ट्रेनिंग वगैरह यही पर? इसमें जो एक तथ्य प्रकाश में आया है कि 2, जैसे आपको बताया गया था कि ये लोग भी प्रशिक्षण शिविर, शारीरिक प्रशिक्षण के नाम से ऑर्गेनाइज करते हैं। तो एक प्रशिक्षण शिविर सगुना मोड़ में अभी हम लोग जगह का पता करवा रहे हैं। हैदराबाद से लोग आए थे उसको प्रशिक्षण देने में, जूडो कराटे के नाम से प्रशिक्षण देने के लिए आए थे। और एक जो मीटिंग रिसेंटली हुआ है जिसके माध्यम से हम लोगों ने इस ग्रुप को फॉलो करना शुरू किया, जो कि 6 और 7 जुलाई को यहाँ पे नया टोला में ही हुआ था, उसमें कुछ हम लोगों को वीडियोग्राफ्स मिली हैं जिसके माध्यम से जो बाहर से लोग आए हैं, जो कि संभवतः तमिलनाडु या केरल के लोग हो सकते हैं, उनको आइडेंटिफिकेशन करवाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। कितने लोग आए? तकरीबन बाहर से 7 या 8 लोग आए हैं और हम लोग स्थानीय पुलिस के माध्यम से भी तेलंगाना से, तमिलनाडु और केरल से जब हमारी फोटोग्राफ्स डेवलप हो जाएंगी तो स्थानीय पुलिस को फोटोग्राफ्स भेज के हम उनको पहचान करवाने का प्रयास करेंगे। क्या किया? तलवार, चाकू, कुछ इस तरह की बातें आई? जो पारंपरिक हथियार होते हैं और लाठी भाला की उसका ट्रेनिंग दिया गया था। उसमें क्या क्या इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स ऐसे मिले? सब्जी बाग की जो रेड्स हुई हैं उसमें STPI का एक कार्यालय चलता था, लेकिन उसमें कोई भी इंक्रीमेंटिंग डॉक्यूमेंट नहीं मिला। वहाँ पे जो 2 लोग हमको मिले थे उनको हिरासत में लिया गया था, पूछताछ किया गया, लेकिन इंक्रीमेंटिंग डॉक्यूमेंट कोई नहीं मिला। फिर उनको PR बॉन्ड पे छोड़ दिया गया। फंडिंग की जो बात आई थी, कहाँ से? विदेशों से फंडिंग हुई है। 83 लाख रुपए जो मिले हैं अजहर के अकाउंट में या उनके भाई के अकाउंट में, तो विदेशी फंडिंग हुई नहीं अभी, क्योंकि सिर्फ बैंक अकाउंट, हमको एक बैंक अकाउंट मिला, हिंदुस्तान का बैंक अकाउंट मिला है जो कि इसका एक गुडविल एंटरप्राइज करके चलता है, उसके नाम से है। उसमें हम लोगों ने संबंधित बैंक को उसके ट्रांजैक्शन डिटेल्स के लिए भेजा गया है, लेकिन अभी तक वो हमको ट्रांजैक्शन डिटेल्स प्राप्त नहीं हुए। बैंक का नाम बता पाएंगे? इंडसइंड बैंक है संभवतः उसी का। जो FIR हुई है उस FIR में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित 12 जुलाई के दौरे में गड़बड़ी करने की आशंका बनी। हाँ, वो उसका कल क्लियर हुआ है। जो हम लोगों का पूछताछ हुआ है, इंटरोगेशन क्रम में बताया कि इनका जो मूल प्लान था कि माननीय प्रधानमंत्री जो 12 जुलाई को जिनका पटना भ्रमण था शताब्दी स्मारक को लेकर विधानमंडल के, उसमें So the SSP Patna Manavjit Singh Dhillon issuing a clarification saying that it is not the Bihar police that drew a comparison to the RSS's form of functioning that became a huge controversy yesterday. He said that one of the during interrogation, the PFI members or those people who were part of the Fulwari Sharif module, they were the ones who said that they were trying to copy the RSS module or the RSS form of functioning or giving training, imparting training at the Shakha levels to the RSS cadre. So he says it is their statement and it's not the Patna police's allusion to anybody. That clarification aside, what he's also said is quite startling. He says that the Fulwari Sharif module and the person who's been arrested today with the agenda of Gazwa-e-Hind and also direct jihad by 2023, in touch with nearly 83 people and in WhatsApp groups whose handler or main administrator is sitting in Pakistan. He's named the administrator and named the handler too, and they are also members from Bangladesh, Yemen and other countries. He says these are 2 separate models, the Fulwari Sharif model and this model that's been this person who's just been arrested today. They are 2 separate models and both were actively trying to propagate their functions. This model that has been cracked today with this arrest
was actually actively recruiting, in the process of trying to recruit people for a direct jihad or direct action in 2023. Rajinder Khanna ji is still with us. Rajinder Khanna ji, this is a serious matter of concern that within this, Rajinder Kumar ji, beg your pardon, Rajinder Kumar ji is with us. Rajinder ji, the most important part is that in Patna, within one radius or square of operation, there are multiple modules which are operating with an agenda which is against the entire ethos of India. The COP even says that an ancient map of undivided India has been seen with on which they wanted to place the flag, Islamic flag or the PFI flag. See, Anandji, the Bihar has been a cradle of this extreme Wahhabi mentality. There have been places and groups which have been very active there. But the only difference which has come now in the last 8-10 years is that earlier they were not doing any activity, direct activity in Bihar, because there was some sort of agreement with some people who were at that time powerful in Bihar that they will not carry out any direct activity in Bihar, but at the same time they will be looking the other side, other way. This the agreement may be tactical, it may not be written, or it may not be even very verbal, but that was there. You see, Fulwari Sharif, I think earlier also, some of the Lashkar-e-Taiba type of people were arrested in an operation by agencies. So, Fulwari Sharif has been it is the place which has quite a substantial number of Wahhabi terrorists linked with having the same philosophy which IS has, or the Al-Qaeda has, or Lashkar-e-Taiba. Lashkar-e-Taiba, Al-Qaeda, IS has. They are all three Wahhabi groups. They have, it is a Ali Hadisi place. It is a stronghold of Ali Hadisi. So, we know, and we have been alerting people even long time back that please keep track of Fulwari Sharif. It is a place where a lot of things are taking place quietly. So it is good that now the police have busted this gang. Because it's not one gang, it is two gangs. The details coming out are startling. They're actually saying they will reach out to the Enforcement Directorate and seek their help and intervention, because there is a money trail that could extend beyond the shores of India. They are also saying, and Manavjit Singh Dhillon, they are very clearly also saying that this current module had participants from multiple countries, and the kind of literature that's been desired is ancient maps of India have been seen. They have talked about an undivided India under an Islamic rule. But more importantly, there was a plot or a planning that was being talked about, that there has to be some amount of direct action or direct jihad that needs to be conducted as soon as 2023. So ahead of the Lok Sabha elections in 2024, and of course a lot of other aspects connected to this. More details are expected to tumble out very, very soon, but a startling revelation and a man now being arrested by the Bihar police, and a press conference by the SSP Patna. Rajinder Kumar ji, thank you very, very much. We're going to take a very, very short break here on The Nation at 5. Stay with us.